नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण जदि आम चैनल को प्रथम आसन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियोटी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करें भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइबे। देखो ये सरकारी कर्मचारी जो रही गुरुत्वपूर्ण खबरटी माननीय सुप्रीमकोर्ट ए गुरुत्वपूर्ण राय गोटे देते आम से विषय आलोचना करवा। दयाकोरी वीडियोटी को शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय जानीपर। देखो ये माननीय सुप्रीमकोर्ट कह द सुप्रीमकोर्ट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉई पेंशन राइट जो अच्छी तापर गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देते आम से विषय आलोचना करवा। जो सरकारी कर्मचारी आपड़ जानते जो कोर्ट व्यवस्था अच्छी न्यायालय जो व्यवस्था अच्छी आम देश में तो जो डेनियल पेंशन मस्ट बी अराइज फ्रॉम ए रूल एनाबलिंग इट जो नियम विषय माननीय सुप्रीमकोर्ट कहते आम से विषय देखा। द सुप्रीमकोर्ट रूल दैट पेंशन कैन नॉट बी डिनाइड पेंशन को डिनाय करा जाय परिबो नहीं द गवर्नमेंट एम्प्लॉई बा सरकारी कर्मचारी को विदाउट ए स्पेसिफिक रूल जदि कौन स्पेसिफिक रूल नथिबो जड़े सरकारी कर्मचारी पेंशन को बंद करा जाय परिबोनी बा दबा पाई मना करा जाय परिबोनी अलाउइंग सच डेनाइल द एम्फासाइज दैट पेंशन इज ए राइटफुल बेनिफिट जोटा कि कर्मचारी पेंशन होची गोटे अधिकार बा राइटफुल बेनिफिट और नॉट ए प्रिविलेज दैट कैन बी आर्बिट्रेरीली विथहेल्ड। द कोर्ट स्टेटेड ये माननीय सुप्रीमकोर्ट कहते डेनियल ऑफ पेंशनरी बेनिफिट जो डेनियल ऑफ पेंशनरी बेनिफिट अच्छी टू आर एम्प्लॉई मस्ट एमानेट फ्रॉम एनी रूल एनाबलिंग गवर्नमेंट फॉर सच डेनियल द जजमेंट रीएफरेंसेस लीगल प्रोटेक्शंस फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई। एटी मध्य माननीय सुप्रीमकोर्ट कहते द सुप्रीमकोर्ट रिसेंटली स्टेटेड दैट एनी डेलियन ऑफ पेंशन बेनिफिट टू एन गवर्नमेंट एम्प्लॉई मस्ट बी बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रूल that allow the government to take such action. एटी मध्य कहते a bench compromising justice B.R. Gabai and Prashant Kumar Mishra made this observation while granting relief to a clerk employed by local authority Jhargram West Bengal सरकारी कर्मचारी थिले से the employee have been denial pension benefit due to unauthorized absence from work जो कर्मचारी जनक थिले तांकर unauthorized absence जो तांकर पेंशन बेनिफिट दि जाए ना ये माननीय सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय देखो कौन कहते आम से विषय देखा। हाउएवर द कोर्ट नोटेड दैट आफ्टर सेवरल राउंड ऑफ लिटिगेशन द अथॉरिटी हैड ऑप्टेड ए क्लासिफाई हर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल लीव द बेंच ऑल्सो हाइलाइटेड द एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल डिपार्टमेंटल इंक्वारी जोटी कि बेंच कहते कि गोटे फॉर्मल डिपार्टमेंटल इंक्वारी होता व्हिच वुड हैव प्रोवाइड द एम्प्लॉई एंड अपॉर्चुनिटी to defend herself. The court concluded that under these circumstances, the state could not deny her pension. It further stated that if an employee's absence is recognized as extraordinary leave under Rule 175 जो आमर वेस्ट बेंगल सर्विस रूल अनुसार सेटा प्रोवाइड करूना इट शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अनऑथराइज्ड लीव दैट वुड डिस्क्वालिफाई हर फॉर रिसीविंग पेंशन बेनिफिट। एटी कोर्ट कहते माननीय सुप्रीमकोर्ट जजमेंट रे डेनियल ऑफ पेंशनर बेनिफिट टू एन एम्प्लॉई मस्ट अराइज फ्रॉम ए रूल दैट एनाबल द गवर्नमेंट टू मेक सच डेनियल व्हेन द सर्विसेज हैव बीन रेगुलाराइज एज एक्सटर्नल लीव तांकर जो अनऑथराइज एब्सेंस थिला ताकू रेगुलाराइज कराइथिला एक्सटर्नल लीव करा जाई ताकू कन्वर्ट करा जाई अनऑथराइज एब्सेंस को दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनऑथराइज लीव for the purpose of denial of pension benefit. The respondent could only deny the pension by proving that the absence was unauthorized, not by failing to conduct an inquiry against her. The plea was filed by Jaya Bhattacharya, who had been appointed as a lower division assistant in office of block development officer in March 1986. She had been absent 107 days while working with the sub divisional officer then from जोटा कि जून 29/1987 रु जुलाई 12/2007 पर्यंत एब्सेंस थिले। परवर्ती पर्यायर भट्टाचार्य क्लेम शी वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम साइनिंग द अटेंडेंस रजिस्टर एंड रिटर्निंग टू वर्क लीडिंग ए शोकज नोटिस फॉर और अनऑथराइज्ड एब्सेंस। आफ्टर सीरीज ऑफ लीगल बैटल इंक्लूडिंग रिट पिटिशन to the High Court and a transfer to the State Administrative Tribunal, her case was eventually remanded and departmental inquiry was ordered. एटी मध्य कहतु इन मे 2011 जोटा कि 2011 द अथॉरिटी डिसाइडेड टू कैटेगराइज हर एब्सेंस एज एक्सटेंडेड लीव but this classification did not grant her salary
फॉर दैट पीरियड जोटा कि एक्सटेंडेड लीव हिसाब से कन्वर्ट कराइला ऑप्शन को किंतु तांको सैलरी से पीरियड रे दिया नहीं भट्टाचार्य लेटर सर्व पेंशन एंड रिटायर्ड बेनिफिट फॉर द ट्रिब्यूनल which ruled that the extended leave did not meet any specific criteria under one जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट रूल अच्छी वेस्ट बंगाल thus disqualifying her from pension eligibility after several unsuccessful appeal she approached the supreme court which ruled in her favor जोटा कि फेब्रुआरी 2025 रे तांको फेवर रे माननीय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देथिले एवं द अदर पॉइंट द कोर्ट एम्फासाइज्ड दैट नो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हैड बीन कंक्लूडेड against her, stating the appellant has been condemned on her without undergoing a departmental inquiry despite the tribunal order. The respondent judge failure to conduct an inquiry cannot shift the burden to the appellant to the proven her case. एटी मध्य कही अल्टिमेट द कोर्ट डायरेक्टेड वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट टू फाइनालाइज भट्टाचार्य पेंशन विथिन 3 मंथ 3 मास भितर पेंशन देवाई ऑर्डर देते थट इट क्लासीफाई दैट सी वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी एरियर पेमेंट से कौन एरियर पेमेंट पाइबेनि कि फुल पेमेंट जी हूँ पेंशन से पेंशन पाइबे तो यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण ऑर्डर था आज खबर जी आपको भल लगे दयाकर निश्चय आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। धन्यवाद।